Today is the 1st May. You know about the importance of this very particular date. This is Labor Day, Mazdoor Divas. But anyhow, uh, we are in the 5th month of the year 2020, and in the probably in the last part of the parallel lines, where I have done already most of the question from the chapters, worksheet 1, worksheet 2, as well as yesterday worksheet 3. We have done 2 or 3 constructions, and some all the brain teaser we have discussed. And in the part of the second, that is the part B of brain teaser, the very first question is, there is a figure like that you have seen in the PDF file I have given earlier. This is perpendicular to it, the point is C. This very angle is given to be 35 degree. This is 53 degree. And if AB is parallel to D, these two lines are parallel. You are required to find ACD. Oh, sorry, this is not perpendicular. This angle it will be required. Okay, very good. I'm not going to solve it. I'm just explaining you. Since the lines are parallel, so you must say that these two angles are equal, as alternated angles are equal. So we'll find this angle as 35 degree too. You have to find out. Now in triangle CDE, the two angles we know. This is 53, this is 35. Can you find this angle? Yes, you can find, as sum of the three angles is 180 degree, and with the help of this angle you can find this. Or once more, any exterior angle is equal to sum of its interior opposite angle. So this angle ACDB equal to angle D plus angle E, that is 53 plus 35. You are going to find the value of ACD as 88. So this is very first question of, that is called BA. And the next question is, I am just here going to describe some. The figure is like that. The figure is given. This is OL, this is PQ, this is ST. PQ are centrally, this point must be R. The angles are given 110 degree. This angle is 60 degree. This angle is 130 degree. And what we are required, that given that PQ is parallel to OL, this line is parallel to OL. Okay, PQ is parallel to OL. And with the given information, as this angle is 110 degree, this angle is 60 degree, this angle is 130 degree, you are required to prove that OL is parallel to ST. Means this line is parallel to this one. Okay, very good. So if these two lines are parallel, certainly this angle must be equal to this angle, or this plus this angle be 180 degree. मीन्स अगर हम इस एंगल की वैल्यू 50 डिग्री निकाल दें तो 50 प्लस 130 इज 180 डिग्री. सो को इंटीरियर एंगल्स अगर 180 डिग्री का हो जाएगा, लाइन मस्ट बी ओके. गिवन दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन, so angle PQR must be equal to QRL, alternate interior angles. So this whole angle must be 110. Out of this is 60. So what about this angle? Certainly this is 50 degree. So we find 50 degree, then use the co-interior angle property, and we will say that this line must be parallel to this one. So this is the second questions. Okay. Now in order to find the next one, I think I have done this one based on the below. Which one is to, yes, actually this is, next one is, what is the next one? Next one is, if AB is parallel to PQ, here is AB and this is PQ, ये parallel दिया हुआ है, and now this is given like M.
This angle is 59 degree. This angle is also 59 degree. Okay. You are required to find this very angle y. बहुत अच्छी बात है, निकाल लिया जा सकता है बहुत आसानी से. कैसे? एक पॉइंट इसको मान लो आप r, और थ्रू r यू ड्रा अ लाइन पैरेलल टू l. ड्रॉ l पैरेलल टू AB. Parallel to AB. Since AB is parallel to PQ, so L is parallel to AB, parallel to. We have drawn. Now, here are two angles, 1 and 2. Since AB is parallel to L, can I say this angle equal to this angle? So, angle 1 equal to 59 degree. कैसे? Alternate interior angles. Again, L is parallel to PQ. L is parallel to PQ. Again we say that this angle is equal to this angle, means angle 2 is also 59 degree. Again same property, alternate interior angles. Now y is what? Y is angle 1 plus angle 2. Angle 1 is 59 degree, angle 2 is 59 degree. So we get 118 degree as the value of whole y. So this you have to draw. This you have to think about that कि how can you find its value. चलिए एक और चीज सोचते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोचते हैं. क्वेश्चन क्या था? ये एक एम की तरह था. चलिए यहाँ AB PQ, ये 59 था, ये भी 59 डिग्री था, और ये इसको निकालना था y को. हमने क्या किया, अब क्या करते हैं कि इसको बढ़ा दिया आगे तक, यहाँ पर कट कर लिए. ये तो ऑलरेडी R है, P है, इसको कुछ मान लेते हैं, लेट इट बी C. ठीक. अब ये 59 डिग्री यहाँ पर हमें मिल गया. सिंस देयर इज नो, खाली प्रोड्यूस कर दिया है, कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस किया है, पैरेलल लाइन नहीं ड्रॉ किया. सिंस AB इज पैरेलल टू PQ, ABC एंगल BAC मस्ट बी इक्वल टू एंगल ACP, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ये एंगल भी क्या हो गया? 59 डिग्री. इन ट्रायंगल RPC y is exterior angle, so this must be equal to sum of these two, or with the help of these two you can find the value of this angle, interior angle R, and with linear pair you can find the value of y. So this way you can also find the value of y. Clear hai? So this is third question. Now next question is, I am not going to give you solution in detail, but I just try to explain your whole solution, most of the solution, not whole, most of the solution. This is part D. A, B, C a triangle, D, E, F a triangle. Given है कि जो AB है वो EF के पैरेलल है. AB पैरेलल EF. D is parallel to BC. Okay. AC is parallel to DF. Okay. And there is some X and Y and some angles are given. This angle is given to be 60 degree. This angle is given to 410 degree. This is given to be Y and this is given to be X. And you are required to find X as well as Y. ठीक है? Parallels दिए हुए, lines are parallel. You just think about that, lines are parallel. गर्मी लग गई थी. अब देखिए ये क्या है, दिया हुआ है ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल. तो कैन यू थिंक दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम? इज इट और नॉट? Yes, it is a parallelogram. The figure is a parallelogram and opposite angles of these two parallelograms are equal. So x is equal to clearly 110. Now if you are finding this one, okay, ये फाइंड कर लेंगे तो हमें ये छोड़ो, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? y plus 60 मस्ट बी 180 डिग्री. सो y की वैल्यू क्या निकल आया? 120. निकल आया कि नहीं निकल आया? तो दिस वे यू कैन फाइंड
पहले तो एंगल जब प्रॉपर्टी का निकाल लिया वैसे भी कर सकते थे, y 120 निकाल लिया, x अगर निकालना है तो फिर हम लोग y 120 से जाके चले जाएंगे इसमें, है ना, यहाँ से भी आ जाएगा ये 120 से चले जाएंगे, फिर ये एंगल क्या है, इस एंगल की जानना, इस एंगल को जान लेंगे हम लोग किसी तरीके से। बट वेरी सिंपल थिंग इज़ कि ये पैरेललोग्राम हो गया, तो ये 60 के हेल्प से हम निकाल लेंगे इस एंगल को, क्योंकि दीज लाइन्स आर पैरेलल एट ट्रांसवर्सल, सो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, अब रही बात क्या निकला हमें 120। x 110 क्यों हमने कह दिया, ये थोड़ा सा गलत हो गया, x इज नॉट 110 बिकॉज this is not the opposite angle of, but yes, the x lies in this parallelogram. Again, this is a parallelogram because this line is parallel to this one, this line is parallel to this one. So now we make this as a parallelogram. Again, opposite angles are equal, so x is equal to 110 degree. So this is the D, question number D of the exercise. So this way we can do many more things. Now if you are not using the properties of parallelogram, then certainly you should use what you have learned in this very particular chapter. Since lines are parallel, so from here DF parallel AC, sorry. So these two angles y plus d यानी y plus 60 must be 180 co-interior angle, so y equal to 120 degree, y तो निकल आया। Again, in order to find कौन कौन सा लिया हमने, हाँ ये दोनों लाइनें लिया और ये ट्रांसवर्सल लिया इंटीरियर। अब इन दोनों को देखिए, x के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 100 है तो हम चले आते हैं इस लाइन में, AB is parallel to EF, then we are going to find angle B, 110 plus angle B भी 180 होगा, so angle B is 70 डिग्री। अब B निकाल दिया हमने क्या 70 डिग्री। अब इस लाइन में फिर से आते हैं दूसरे तरीके से और ट्रांसवर्सल इसको लेते हैं, तो क्या पा रहे हैं B plus X is 180, जिसमें से B निकाला आपने 70, तो X क्या निकल के आएगा, X निकल के आएगा 110. So we are not using here the properties of parallelogram, but it is good if you are going to use property of parallelogram, so it can be easily done, as you have to label some more thing. Let it be P, Q, R, S, T and U. You can say that P, E, S, B. P, E, S, B are parallel, is a parallelogram, so X is equal to 110 degree as well. D, U, C, R is a parallelogram, so Y should be what? A sum of adjacent angle, co-interior angle से हम इसको निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे 120 degree. So this is the, now next question is, there may be some sound aberration because of fan. There is a line parallel, दिखाना है हमें LM, to show L is parallel to M, given what, for what value, किस value को, there is a transversal, this angle is given to be 5x plus 35 degree and this angle is 45 degree. Okay, 45 है तो ये क्या हो जाएगा 45 degree, vertically opposite angle. If line L and M should be parallel, if they are parallel, certainly their co-interior angles are supplementary, means 5x plus 35 and plus 45, if it becomes 180 degrees, certainly L is going to be parallel to M. So here 5x is equal to 180 minus, this is 80, 100, so x equal to 100 by 5, that is 20 degree. So if x becomes 20 degree, the line becomes parallel to each other. Clear? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर E of brain teaser part B. So in the next part there is I am taking a question third, 2 में भी दिया हुआ है, there are 3 lines, again there are
some more lines. L, M, N, they are parallel, and this is P, Q, R, they are also parallel, and some angles are given. Angle 1 is given to be 85 degree, and angle 1 is here. This angle 1, and it is given to be 85 degree. Marked, this is X, this is Z, this is Y, this is T, this is U, this is S. So X, Y, Z, T, S, U. X, Y, Z, T, S, U. 1 is 85 and lines are parallel. ये था क्वेश्चन नंबर 2 में. अब you can find alternate interior, lines are parallel, so alternate interior angle, angle X is equal to angle 1, so it is 85 degree. You can, since this L is parallel to M, so X must be equal to Z, so Z is also 85 degree. Have an idea? Yeah. Again, with the from here you can say this line is parallel to this, so 1 plus y should be 180 degree. 1 plus y should be 180 degree. So y is equal to 180 degree minus 1, 1 is 85, so it is 95 degree. Y is what? X nikla 85 degree, y 95 degree, and z is also 85 degree. Now can you find the value of u, s, t? Again, L is parallel to n, so 1 must be equal to s. 1 must be equal to angle s, corresponding angle, so s is also 85 degree. Since this line is parallel to this one, so s is equal to t, alternate interior angle, so t is also 85 degree, and s plus u is 180 degree. क्यों? लीनियर पेयर, s निकाला आपने 85 तो u निकल गया. वैसे भी यहाँ से भी चल सकते हो आप. दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ये 185 है तो ये भी 85 होगा, तो 85 इज इक्वल टू, सो u इज ऑल्सो 95 आ रहा है ना, तो t 95 85 आएगा, तो ये कैसे आएगा? 185 है, सॉरी ये इंटीरियर यहाँ ना होगा, सॉरी वो 18. हाँ, तो u क्या होगा? 1 प्लस यू, s प्लस यू. ये को इंटीरियर एंगल से 180, ये लीनियर पेयर से 180, सो u इज इक्वल टू 95 डिग्री. दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ s, u, t as well as x, y, z. Next question is, there is a line segment AB. The length of this is 6'1". You have to find 3 points P, Q, R, P, Q and R, P, Q and R, such that AP equal to PQ equal to QR equal to RB. But without drawing the parallel lines at A and B, जो हमने मेथड बताया था कि इधर 60 बना लो, इधर 60 बना लो, क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट में बांटना है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 करके ऐसे मिलाते चले जाएंगे. अगर हम इस तरह से, तो 4 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा. इस तरह से नहीं करना है. और कौन से मेथड से आप इसको बना पाओगे? तो हमने बताया था 2 दिन पहले कि ये क्या करेंगे हम लोग. वी जस्ट बाइसेक्ट देम परपेंडिकुलरली. ए बी को हमने बाइसेक्ट कर लिया. गेट अ पॉइंट हियर, इट इज अ पॉइंट Q. ओके, एंड नाउ वी बाइसेक्ट AQ एज वेल. AQ को बाइसेक्ट कर लो एंड टेक द पॉइंट P. फिर QB को बाइसेक्ट कर लो. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने आपको बता दिया था. Let it be done. So without drawing parallel lines at A and B, we are able to finding the 3 points P, Q, R such that AP equal to PQ equal to QR equal to RB. Is it or not? So this way we can find the solution of question number 3. Now here question number 4. हॉट्स में कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चन है. इलिचमेंट में 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है. There is a figure
in which two barrels are given, barrel number 1 and barrel number 2. There is a kitty, means a cat, and you have to find the kitty to reach from barrel 1 to barrel 2 by finding all the missing angles. जितने भी एंगल मिस कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू नहीं दी गई है, उनको छूते हुए निकलना है. So you have to do this. And so what we have studied today and before that, and I am going to leave some questions. Okay, there is a cube. Another question, question number 4. You have to name the edges of the adjoining cube which are parallel to. भाई किसी भी क्यूब में how many edges are there? You just think about the room. So you will find that there are 4 edges on the floor, 4 edges above the floor, and 4 edges vertical slant. मतलब you can say lateral. So there are 12 edges. So which edges are parallel to which one? So इसमें आप पाओगे कि 4 एज जो है आपस में पैरेलल आपको मिलेंगे, है ना. सो लेवल दिया हुआ है, आपको केवल बताना है कि पैरेललोग्राम इस क्यूब का कौन सा एज ए बी के पैरेलल है, कौन कौन से, विच एजेस, कौन सा एज के पैरेलल है, कौन ए के एजेस. फिर दिया क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए ई एंड ए बी. ए ई एंड ए बी कॉमन पॉइंट इज ए. So A is the point of intersection. Are the edges AB and DH parallel to each other? AB and DH. No, AB and DH. AB जो है वो समझ लो कि सीलिंग का ऊपर वाला एज है, और DH जो है दो वॉल के बीच का एज है. तो they are not parallel. They are not parallel. And neither they are intersecting. वो intersect भी नहीं करेगा. Are edges EF and BC are parallel? EF and, you just look in the figure of the PDF file, EF and BC. Here you see EF at the floor, BC is also at the floor, but also in the ceiling, but inclining other side, other way. So if you see your room, you will find that BC, and level the corners of your room, you will find that EF is also not parallel to BC. So lines are same plane, are either parallel or intersecting. किसी भी हम लोग जो रूम में बैठे रहते हैं तो जो लाइंस होते, एजेस होते हैं, या तो आपस में पैरेलल होते हैं या इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग भी जनरली माना जाता है परपेंडिकुलर. जनरली क्या माना जाता है? परपेंडिकुलर. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द एज. एंड द हॉट्स में दिया हुआ एक फिगर, एक कुछ इस तरह का फिगर बना हुआ है. ये लाइन इसके पैरेलल एक्चुअली है, और ये लाइन इसके पैरेलल है. मतलब ये आपको दिखाया गया है एरो से. एरो लिखा मतलब इस तरह का, मतलब दीज टू लाइन्स आर पैरेलल. डबल एस दिया मतलब दीज टू लाइन्स आर पैरेलल. और यहाँ पर दिया हुआ है Z, यहाँ दिया हुआ है 50 डिग्री, यहाँ दिया हुआ है Y, ये X, और ये 110 डिग्री. ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है आपको. तो कोई बात नहीं है, देखते हैं. देखो ये 110 अगर है ये एंगल, तो ये भी 110 होगा, और ये 110 होगा. तो सम ऑफ दीज टू एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री. तो y की वैल्यू होगी 70 डिग्री. ठीक है ना. चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये अगर y है तो ये भी y है, मतलब ये एंगल भी 70 डिग्री है. अब ये 70 है, ये 50 है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ z ऑल्सो. तो 70, 50, 120, यू विल फाइंड z इज इक्वल टू 60 डिग्री. जस्ट गो इनसाइड द बिग ट्रायंगल. One angle is 70, second angle is 50, and third angle is what? 70, 50, and then it's 60. So you can also find the value of 60 degree. As well, if this Z is 60 degree, then this and these two lines are given to be parallel. So corresponding angles are equal. So X equal to Z. तो Z उस हिसाब से भी हम X की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो this is your HOTS. And now one question is left with enrichment, and I am going to leave it. And so read out what you have to know. You have discussed all these things. You can read in PDF file. Lines parallel to the same line are parallel to each other. Lines perpendicular to the same line are parallel to each other. Now you can use, if you find 2 lines or 3 lines perpendicular to same line, you can simply say that lines are parallel. Division of line segment into n equal parts. You can find you can do it by
constructing parallel lines. A line segment can be divided internally in a given ratio. Again, we have done yesterday. So all these things are done. So in my concept, I can say that the chapter parallel lines is over. You have to practice more and more. So today, on the first day of the month May, we have finished the 6th chapter of the topic, your book, and now moving towards some another chapter, it is better to go for some test. So I may plan some test, you find. सो आज सिर्फ इतना ही, आज सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लो, बाकी आप बनाओ खूब. अभी आपको वेरिएशन के डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन में अगर कोई डाउट्स है तो उससे पूछो, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में कोई डाउट्स है तो उससे पूछ लो, है ना. अलजेब्रिक आइडेंटिटी से कोई डाउट है तो पूछ लो. और इसमें अगर डाउट बनता है अलजेब्रा जो है, अभी हमें 2 चैप्टर और पढ़ने हैं पिछले साल के हिसाब से. पिछले साल जो सिलेबस था हाफ ईयरली तक आया था, अभी 2 और पढ़ने हैं. एक ग्राफ का कोई चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, और एक मेंसुरेशन का है, ठीक है ना. सो ये 2 चैप्टर हमें अभी और पढ़ने हैं, और पढ़ना तो बहुत कुछ है, पूरी बुक ही पढ़नी है. सो मेंसुरेशन पढ़ना है, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14. We have studied squares and square roots, cubes and cube roots, direct and inverse variation, profit loss and discount, algebraic identities, and then parallel lines. And now we have to further go for introduction of graphs as well as mensuration. But before going for these last 2 chapters, I am going to revise, and for in revision I am going to take some tests, giving you some assignments, and you have to give. अब तक आप लोगों ने असाइनमेंट को नहीं सॉल्व करके दिया है, अब आपको सॉल्व करके देना पड़ेगा, ठीक है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.